Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure and an honor being in such esteemed company. पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा एजाज़ निसार साहब का और पूरी सीईओ क्लब की टीम का जिन्होंने ये समिट ऑर्गेनाइज़ किया और मुल्क भर के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और बाकी शोबों के जो तमाम हजरात हैं जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, उनको यहाँ बुलाया। और ख़ुशी इस बात की है कि आज का जो मौजू है वो इतना एक अहम मौजू है कि उस पर डायलॉग किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, अ प्लेस वेयर देयर इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, a society where everyone can dream of a prosperous future. How do we achieve this? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क आज एक मुश्किल मोड़ पे खड़ा हुआ है जो बहुत तकलीफ दे है। बट अगर ऐसे कई ममालिक हैं जो हमसे भी बुरे हालात में थे और उन्होंने अपने आप को इस मुश्किल से निकाला और ऐसी तरक्की पाई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो चाइना है। What they have done in the last 40 years is a remarkable feat. But we have to start somewhere. There are many issues that need to be dealt with. There are many reforms that need to be made. But we can all agree that there are 3 or 4 major issues that need to have laser-like focus. And I'm not just talking about government policy. The private sector here has a huge role to play because without a thriving and a dynamic private sector, we cannot have a prosperous Pakistan. So first and foremost, I would like to talk about the development we need to do in the agriculture of Pakistan. We are supposed to be an agriculture-based economy, yet we are a net food importer. Our agriculture yields have to increase. We are not at par with global agriculture industry yield levels, and this is only possible if the private sector starts to get involved. We have corporate farming, and we leverage economies of scale. We have to adopt scientific methods, and we have to adopt a scientific approach to agriculture. We need to bring in best practices into agriculture. We need to treat agriculture like an industry. Only then can we come at par with our global peers. If we're going to talk about natural resources, we have to talk about mining. Mining globally is a multi-billion-dollar industry, yet we are not even part of the global supply chain. First of all, we need to have a geographical survey. हमें पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से minerals हैं, किस areas में, और कौन से हैं जो economically feasible हैं mine करने के लिए. Then we need to invite the global firms who have the technology to come and help us mine these minerals. और हमने ये भी नहीं करना कि उन global firms को हम बुलाते हैं और legal hurdles में ऐसे फंसा देते हैं कि वो खुद ही भाग जाते हैं यहाँ से. What happened in Rigu Dig must not happen again. We have to thrive in this mines and mineral industry, otherwise we will always have this current account deficit issue. And if we're going to talk about the current account deficit, there is only one solution to it: exports, exports, exports. और इसमें हम सबका कसूर है. अगर मैं अपनी ही कंपनी की बात करूं, तो पहले तो हमारा कभी एक्सपोर्ट पे फोकस ही नहीं था. We were only exporting maybe 10% of our product. But we have realized now that if we are to grow and if we are to become a global player, the only way is to export. And for that, we need to adopt best practices and make sure that our efficiency and our quality is at par with regional and global players. Exports not only bring you dollars, but they also employ 250 million people that you have in this country. This population should be a source of strength, not a liability. And we need to focus on value-added exports, exports which have a high component of labor cost within them. If you think about it, the only export which has 100% local component is IT. अगर आप किसी भी और export को ले लें, टेक्सटाइल हो, स्टील हो, ग्लास हो, सीमेंट हो, उसमें कोई ना कोई imported component होता है. अगर raw material imported नहीं है, तो उसकी energy imported होती है, whether it is in the form of LNG, coal or fuel oil. IT is the only export which is 100% local. That means if you are exporting $5 billion, you are not importing anything against that $5 billion.
So we need to create an enabling environment for our IT firms, and we need to encourage the learning of these skills at every level of education. Only then can we have high-earning individuals in our society who can not only bring in dollars, but have a prosperous economy over here. आजकल मुल्क में एक बड़ा पेसिमिस्टिक सेंटिमेंट फैला हुआ है, एंड हमें एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी नज़र आ रहा है. बट इफ़ वी लुक, पिछले 3-4 महीनों में ऐसे कुछ इक़दामात लिए गए हैं जो हमने पहले कभी सोचे भी नहीं थे. एंड फॉर दिस I'd really like to appreciate the caretaker government who have taken difficult, painful, but important steps. They have done things like curbing smuggling, curbing the illegal hoarding of dollars in foreign exchange companies. They have taken energy pricing reforms which were not taken for the last 15 years and which have resulted in the circular debt. All of these reforms are painful, they are difficult, but my only hope is that we continue with them and we make sure that we continue with these policies. Otherwise, there is no way that we will have sustainable growth in the future. आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया. हमें फील्ड फर्टाइल लैंड दी, पहाड़ है, पानी है, कोस्ट लाइन है, हमने बस यूटिलाइज नहीं किया. आई होप दैट इन 20 years when we are talking to the next generation, हम ये उनको कह रहे हो कि जी पाकिस्तान में पोटेंशियल था, हमने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और ये देखिए हमने पाकिस्तान को कितनी तरक्की दिलाई. थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर.